খাওয়া দাওয়ার পরে সকালবেলাতে হঠাৎ ব্রিদিং প্রবলেম স্টার্ট হয়। মেবি ডায়াবেটিসের সমস্যার জন্য এটা হচ্ছে। আর তখন যখন সিবিজি করা হয়েছিল তখন 300 অ্যাভাভ ছিল। शिशु सदन में 16 दिन आईसीयू में एडमिट थी। जो बिस्तर में यूरिन ज़्यादा हो रहा था तो मेरे पापा ने यूरिन टेस्ट करवाया और जब यूरिन टेस्ट करवाया तो यही शुगर निकला। For the last 15 or 20 years, I've been passionately involved in the management of type 1 diabetes. And if you look at in India right now, on an average, if someone is diagnosed with type 1 diabetes, straight away he loses about 45 years of life. ये खूब पेशाब कर रही थी, इतना पेशाब हो रहा था, हम लोग नहीं समझ पाए कि ये पेशाब क्यों कारण हो रहा था। হাজরা শিশু সদন যেখানে রয়েছে ওখানে এমার্জেন্সি যে মাতৃমা রয়েছে, মাতৃমাতে ও পিআইসিইউতে অ্যাডমিট ছিল। ওখান থেকেই আমাকে পিজিতে রেফার করা হয়েছে এখানে দেখানোর জন্য। Unlike other forms of diabetes, this form of diabetes needs special attention and special care, not just in the form of insulin, education or other things, but the empathy, availability of resources, maintenance of supply chains, and an understanding on behalf of everyone concerned. यहाँ पर बहुत अच्छा सुविधा मिल रही है हम लोगों को। सबसे बड़ा इंसुलिन जो ग्लाइकोजन इंसुलिन होता है वो मिल रहा है, क्योंकि उसका कीमत बहुत ज्यादा है बाहर पे। ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप्स। With the help of the government of West Bengal, came up with a suggested model for care of diabetes, which we feel is replicable, scalable, relatively economical, and will probably make a big difference in the lives of these children. UNICEF, for the first time in its 5-year program portfolio in the country, has started working on non-communicable diseases and children. The good thing is that India is full of good examples. For example, the type 1 disease model from West Bengal, which was also published in the Lancet, that can be taken to other states. These interventions ensures free access to insulin and glucose monitoring strips, lifting a significant burden on the part of the families and their communities from the most vulnerable groups. আমরা ডিস্ট্রিক্টে এটা ডিসেন্ট্রালাইজ করছি গ্র্যাজুয়ালি, এবং আলটিমেটলি আমাদের সেকেন্ড যেটা গোল সেটা হচ্ছে টু ব্রিং অ্যাওয়ারনেস অ্যামং দ্য কমিউনিটি as well as the frontline health worker. पीजी हॉस्पिटल, आईपीजीएम एंड एमआरएफएफकेएम हॉस्पिटल, अगर किसी का भी बच्चा का ट्रीटमेंट चले शुगर का तो वो कहीं पर भी जाकर करवा सकता है. And I'm very grateful to everyone who's actually helped and supported, are continuously helping and supporting this program. Apart from the state government and the central governments, UNICEF has been our partner, Clinton Health Access Initiative has been our partner, JDRF, which is now named as Breakthrough Type 1, has been our partner. So everyone who's actually helped us, I think, this is not one individual's job, it's not one government's job. We need on board everybody to take this movement forward for management of type 1 diabetes.